गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी स्ट्रैंगल 2.0 का परफॉर्मेंस कैसे रहा इस वीक के अंदर। आज तारीख है 20 दिसंबर 2024, फ्राइडे की सुबह है और कल थर्सडे को एक्सपायरी हो चुकी है लास्ट वीक की। अ, मैंने अभी तक सिर्फ 2 वीडियोस डाले थे इससे पहले जो कि इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में बताते हैं। और ये स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं, सिंपल एक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम ट्रेडर भाई बहन हैं, कॉमन ट्रेडर्स, नॉट एडवांस ट्रेडर्स या एक्सपर्ट ट्रेडर्स, बट जो कॉमन ट्रेडर्स हैं वो स्ट्रैंगल्स ही ज़्यादातर करते हैं मार्केट के अंदर। और उनके लिए एक फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा। अ, जैसे कि आप सब जानते हैं, वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है मार्केट में। और लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें पिछले वीक के परफॉर्मेंस को डिस्कस किया था। इतना स्टेबल मार्केट था लास्ट वीक में कि स्ट्रैंगलर्स के लिए ऑप्शन सेलर्स पैसा बनाना बहुत ईजी था। और इस वीक में बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट हुआ और एक बहुत वोलाटाइल वीक रहा। और इस वोलाटाइल वीक के दौरान यहाँ पे फ्राइडे के दिन ही मार्केट ने अप डाउन मिला के तकरीबन 900 पॉइंट का मूव किया। और उसके बाद कंटिन्यूसली 3 दिन तक गिरा और थर्सडे को एक मैसिव कैप डाउन ओपनिंग दी। इस वीक में क्या स्ट्रैंगल सर्वाइव कर सकता है और क्या स्ट्रैंगल का आउटपुट रहा, तो आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी ने ना सिर्फ हमको लॉस से बचाया और लेकिन 0.5% का प्रॉफिट भी कमा के दिया। कैसे स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे हम लोग देखेंगे। और बहुत ही लेवल स्ट्रैटेजी है। जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ और जो बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रेडिंग को नहीं एंडोर्स कर पा रहे हैं, नए स्ट्रैटेजीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, एक हेल्पिंग हैंड है। आई होप इसमें उनको कुछ मदद मिलेगी। तो आइए चलते हैं फ्राइडे के दिन, 13 दिसंबर। इस दिन 9:25 पे जो हमारा रूल होता है उसके हिसाब से हमने अपनी पोजीशन ले ली। मार्केट वॉज एट 24418 एंड जो हमारा फ्राइडे के दिन जो डिस्टेंस रहता है 1550 पॉइंट के करीब, तो वहाँ पे 23,000 पी का हमने सेल कर दिया और अपर साइड में उसका 75% ऑफ दैट डिस्टेंस, तो तकरीबन 25,500 सी, 25500 सी, ये हमने सेल कर दिया। तो ये हमारा एक फार फार ओटीएम स्ट्रैंगल बन गया। और इसका जो सेकंड हमारा जो पॉइंट रहता है स्ट्रेटजी का, वो होता है कि जो एडजस्टमेंट पॉइंट है वो कब करना है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 300 पॉइंट ऑन द डाउन साइड इज बट आई यूजुअली टेक एज अ गुड मूव ऑफ द निफ्टी एंड दैट सिग्नल्स दैट वी हैव टू एडजस्ट द स्ट्रैंगल। तो 300 पॉइंट ऑन द डाउन साइड इट वाज कमिंग टू 24118 एंड ऑन द अपर साइड अराउंड 250 या 225 पॉइंट्स के आसपास हमारा एक अच्छा मूव माना जाता है, जिसको जो आ रहा था 24668 पर, 24668। अब फ्राइडे के दिन मार्केट ने जब पहले तकरीबन 300 पॉइंट डाउन मूव हुआ और वहाँ से 600 पॉइंट अप मूव गया, तो इसने लोअर जो हमारा एडजस्टमेंट पॉइंट था उसके काफ़ी क्लोज आया था, 24149 के करीब आया था। और हमारा जो एडजस्टमेंट पॉइंट था 24118 था। तो इट डिडंट टच इट, सो वी डिडंट एडजस्ट ऑन द लोअर साइड। लेकिन जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है और 600 पॉइंट अप जाता है, देन इट वेंट quite high and it crossed our upper adjustment point of 24668 very comfortably, and उसकी वजह से हमें इसको उसी दिन शिफ्ट करना पड़ा। तो उस टाइम पे अराउंड 24,700 के जब मार्केट ने टच किया तो हमने अपने स्ट्रैंगल को, पुराने स्ट्रैंगल को क्लोज कर दिया और नया स्ट्रैंगल डिप्लॉय किया। और ये नया स्ट्रैंगल सेम डिस्टेंस पे, मतलब नीचे की तरफ 1500 1550 पॉइंट, ऊपर की तरफ 1200 पॉइंट के करीब हमने डिप्लॉय किया था। तो नीचे की तरफ अभी आ गया 23,300 पी और अपर साइड 25,750 सी। तो इफेक्टिवली आपने स्ट्रैंगल को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ओके, मार्केट मूव किया और उसके साथ आपने स्ट्रैंगल को भी आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब आते हैं मंडे के दिन 16 दिसंबर को मार्केट 9:25 पे 24,702, ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू थी। और 24,702 के हिसाब से मार्केट ने ज़्यादा मूव नहीं किया था फ्राइडे के बाद और 2 दिन का अच्छा खासा टाइम लेके आपको मिल गया। तो जो कि हम मंडे के दिन करते हैं, अ, हर एक दिन हम अगर मार्केट मूव नहीं करता है, हम वहाँ से फ्रेश कैलकुलेशन करते हैं और डिस्टेंस को क्लोज करते जाते हैं। फ्राइडे को हम 1500 पॉइंट नीचे, मंडे को 1200 पॉइंट नीचे, ट्यूसडे को 900 पॉइंट नीचे, और ऐसे ही इसको हम क्लोज करते हैं। तो मंडे को 24,702, ये हमारा 9:25 पे ये हमारा पॉइंट था। और यहाँ पे हमने 23,500 का पी सेल किया और 25,650 का सी, पुराने स्ट्रैंगल को हमने क्लोज कर दिया। जो फ्राइडे को हमारा स्ट्रैंगल चल रहा था उसका हमने प्रॉफिट लिया, उसको क्लोज कर दिया और नया स्ट्रैंगल थोड़ा सा अंदर की तरफ, तकरीबन 200 पॉइंट, 100 पॉइंट ऑन द अपर साइड एंड 200 पॉइंट ऑन द डाउन साइड, हमने क्लोज करके नया स्ट्रैंगल डिप्लॉय कर दिया। और इस टाइम पे जो मेरे
एडजस्टमेंट पॉइंट थे वो अगेन 300 पॉइंट डाउन साइड एंड 225 to 250 पॉइंट ऑन द अप साइड, दे वर कमिंग एट 24400 एंड 24950. बट मंडे इसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को ही, एडजस्टमेंट पॉइंट्स को मार्केट ने टच नहीं किया. सो दैट वाज अ बेनिफिट फॉर अस. ट्यूसडे 17 दिसंबर, अब आते हैं 9:25 को 17 दिसंबर पे. मार्केट इस टाइम पे था 24,616. तो 900 पॉइंट नीचे की तरफ और तकरीबन 650 पॉइंट्स ऊपर की तरफ हमने मार्केट स्ट्रैंगल को वापस क्लोज इन किया, पुराने स्ट्रैंगल को क्लोज कर दिया और एक नया स्ट्रैंगल डिप्लॉय किया. 23,650 P ऑन द डाउन साइड, 25,300 C ऑन द अप साइड. और ये जो था, इट इफेक्टिवली मींट दैट सिंस द मार्केट हैज नॉट मूव्ड, वी हैव जस्ट क्लोज्ड आवर स्ट्रैंगल इन. देखिए, हम अभी जो नेट है या जो टेंट है इसको हम छोटा करते जा रहे हैं अगर मार्केट मूव नहीं करता है. ठीक है. और दूसरा हमने एडजस्टमेंट पॉइंट निकाल लिया लोअर साइड पे, जो कि आ रहा था 24316 और अपर साइड पे आ रहा था 24845. तो ट्यूसडे के दिन मार्केट ने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया और इसने लोअर ब्रेक इवन को तोड़ा. ये आई थिंक 24302 के पास गया था और इसने 24316 को ब्रेक कर दिया. ब्रेक करने के बाद हमें एज पर आर रूल हमने पुराने स्ट्रैंगल को क्लोज किया और एक नया स्ट्रैंगल डिप्लॉय कर दिया 24,300 के को बेस लेते हुए, मिड पॉइंट लेते हुए, और सेम डिस्टेंस जो कि हमने ट्यूसडे के लिए हमारा मॉर्निंग में लिया हुआ था, सेम डिस्टेंस पे हमने दूसरा एक स्ट्रैंगल डिप्लॉय किया जो कि 23500 P एंड 25,200 C. 25,200 C ये हमारा नया स्ट्रैंगल बन गया. इफेक्टिवली क्या हुआ, इफेक्टिवली मार्केट नीचे आया तो हमने अपने स्ट्रैंगल को भी नीचे की ओर शिफ्ट किया. साथ के साथ हम इसको दोनों साइड से क्लोज करते हुए आ रहे हैं और अगर मार्केट में हमें मूवमेंट दिख रही है, सब्सटेंशियल मूवमेंट, उस टाइम पे हम इसको मार्केट के डायरेक्शन के साथ शिफ्ट करते हुए आ रहे हैं. वेडनेसडे को हम जनरली एडजस्टमेंट नहीं करते हैं. वेडनेसडे को हम जनरली एडजस्टमेंट नहीं करते हैं क्योंकि जो 900 पॉइंट का रेंज है उसे हम प्ले करने देते हैं फॉर वेडनेसडे ऑल्सो, ताकि थर्सडे को एक बार में हम अच्छा खासी गैप पे इस ट्रैंगल को डिप्लॉय कर सकें. तो एनीवे मार्केट वेडनेसडे को भी 9:25 पे तकरीबन 24343 पे था, तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया था. वेडनेसडे क्लोजिंग के दौरान, वेडनेसडे क्लोजिंग के दौरान क्योंकि वेडनेसडे रात को फेड का इवेंट था, तो उस दौरान हमने क्या किया था कि अ, थोड़ा सा ऑप्शन प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस लग रहे थे. 25,000 सी जो था वो क्लोजिंग के टाइम पे तकरीबन 7.5-8 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था, विच इज़ क्वाइट अब नॉर्मल. तो और मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट के नीचे नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था. तो यहाँ पे एक कॉल लेना लाजमी होता है कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो अपर साइड पे डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड, बट लोअर साइड में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है. एंड प्लस अपर साइड से इतना अच्छा आपको प्रीमियम मिल रहा है तो इट मेक सेंस इफ़ यू कैन एडजस्ट इट. अगर आप एडजस्ट नहीं भी करते कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को लगा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहिए. तो टुवर्ड्स क्लोजिंग मार्केट वॉज अराउंड 24,200. तो यहाँ से मैंने एक गैप अप लगाया कि या तो -300 पॉइंट और +300 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है. और उसके आगे जो हमारी थर्सडे की रेंज होती है जो कि तकरीबन 550 पॉइंट नीचे और 400 पॉइंट ऊपर, तो इसको कैलकुलेट करके गैप अप गैप डाउन और जो एडिशनल रेंज हम थर्सडे को इम्प्लॉय करते हैं उसके हिसाब से मैंने अपने स्ट्रैंगल को नीचे की तरफ शिफ्ट किया. और जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई वेडनेसडे क्लोजिंग को वो थी 23,350 P एंड 25,000 C. तो ये वेडनेसडे को मैंने पोजीशन लेके छोड़ दिया जस्ट फॉर द इवेंट एंड इट शुड फील सेफ. थर्सडे को क्या हुआ आप सबको पता है, मार्केट तकरीबन 300 पॉइंट प्लस गैप डाउन खुला, आई थिंक 23,875. बट क्योंकि हमारा दोनों तरफ रेंज बहुत अच्छी थी, वी वर कंफर्टेबली इन द टेंट. सो डिस्पाइट दिस स्पाइक इन वोलेटिलिटी, या आप कह लीजिए कि जो भी इसमें एक ग्लूम एंड डूम चल रहा था अर्ली मॉर्निंग मार्केट में गिफ्ट निफ्टी को देख के, तो हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं हमारी तरफ. ये होता है एक अच्छा खासा स्ट्रैंगल में डिस्टेंस रखने का फ़ायदा कि आप टेंशन फ्री रहते हैं. इतने वोलेटाइल मार्केट में भी टेंशन फ्री रहना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे हिसाब से. तो बस थर्सडे को इसने 23,350 P जो था उसको मैंने वहीं रहने दिया क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से भी वहीं आ रहा था. और 25,000 सी को मैंने क्लोज किया 24,500 सी में, क्योंकि एक यहाँ पे ये कहीं पे एक डर था या कहीं पे एक फिजिबिलिटी थी कि शायद डीआईआई जो है वो पैसा पंपिंग करें और मार्केट को एक स्विफ्ट वी शेप रिकवरी दें. तो इसलिए 24,500 वॉज द सेफ बेट. हालांकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 25,300 सी आ रहा था अगर हम 400 पॉइंट ऊपर लें जो हम यूजुअली थर्सडे को लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन रख के 24,500 सी पे हमने अपर लिमिट लगा दी. उसके बाद मार्केट को छिड़ा नहीं और मार्केट ने काम किया और डे के एंड पे हमें वीकली जो है
0.5% का प्रॉफिट दे गई, जो कि इस वोलेटाइल मार्केट में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ये तो रहा मेरा लाइव ट्रेडिंग का जो, या स्ट्रैटेजी को कैसे वोलेटाइल मार्केट में ऑपरेट करना है। सो लास्ट वीक वाज अ स्टेबल मार्केट, आपने देखा इसका परफॉर्मेंस, और दिस वीक वाज अ वेरी वोलेटाइल मार्केट एंड आपने देखा इसका परफॉर्मेंस। सो यस, स्ट्रैंगल कैन वर्क इन अ वोलेटाइल मार्केट ऑल्सो, provided you are not greedy, provided you want to keep safe distance at all point of time। अभी जो भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई थी, कि इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट को शिफ्ट नहीं किया होता कि चलो मैंने वेडनेसडे के एंड पे मैंने सोचा था कि मुझे नहीं एडजस्टमेंट करना है, तो मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नेक्स्ट डे एडजस्टमेंट कर लीजिए। अगर 50 पॉइंट ऊपर नीचे आपने एडजस्टमेंट किया, आपको लगा कि यार अभी एडजस्टमेंट पॉइंट क्रॉस हो गया, नहीं मैं और 50 पॉइंट्स वॉच करना चाहता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत लीवे देती है, बहुत फ्रीडम देती है, और इस फ्रीडम, सिर्फ एक आपका ध्यान में रखिएगा, दैट यू शुड फील कंफर्टेबल। आप पीसफुल हैं या नहीं है, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है, और इसको अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। देखिए, एक्सपर्ट्स आएंगे जाएंगे, ठीक है, एक्सपर्ट्स आके मार्केट के बाद आपका हो सकता है बहुत बड़े लॉस में बैठे हों आज, और आपने कल बहुत सारे वीडियोस भी देखे हों सो कॉल्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के, उसमें से सब दे आर वेरी कूल। हाँ, दे हैव कम विद सम रैशनल एक्सप्लेनेशंस, इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, और ठीक है, हम अगले दिन की बात करते हैं। और आप यहाँ पे शायद बैठ के सोच रहे हो कि यार मेरी तो 3-4 महीने की कमाई चली गई, और हाउ कैन ही सो कूल। तो बात वही है कि अपना जो ट्रेडिंग है अपने आप को ही देखना होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सेफ रहिए। और सबसे ज़्यादा जो आपका दिमाग है, जो आपको वार्निंग साइंस दे रहा है, जो आपको सिग्नल्स दे रहा है कि नहीं भाई अभी शिफ्ट कर लेना चाहिए, कभी और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देना चाहिए, तो उस चीज़ को मानिए। अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी ये चीज़ बोलती है कि यार नहीं, स्ट्रैंगल में तो एक लेग फिक्स होता है और हम उसी को फिक्स लेके चलेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। एम इज़ कि आपका, uh, you should feel comfortable, and when you feel comfortable, when you feel safe, that is the only time you will make rational decisions. You will not make decisions in panic, or worst decisions in trading, worst losses are suffered only when there is panic. So don't wait. Now एक और क्वेश्चन जो आया था, एक हमारे बहुत परम मित्र हैं, उनको जब ये स्ट्रैटेजी हमने बताई थी तो उनकी तरफ से एक पॉइंट आया था कि इतना दूर आप पोजीशन ले रहे हैं उसमें तो प्रीमियम रहता ही नहीं है। तो ये एक बहुत कॉमन पॉइंट निकल के आता है कि प्रीमियम नहीं रहता, तो हमें और क्लोजिंग करना चाहिए। क्लोजिंग करने के बाद फिर वो हेज खरीदते हैं। जब आप क्लोज करके हेज खरीद रहे हो, तो आपका तो उतना पैसा, उतना प्रीमियम इफेक्टिवली वही आ रहा है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन हेज, आई एम एक्सटेंडिंग माई रेंज। ऑल्दो इन ट्रेडिशनल ऑप्शन सेलिंग, ये या किसी भी ट्रेडिंग में हेज रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करता। दैट इज माई, आई प्रेफर रेंज ओवर दैट hedge that I'm going to buy. I prefer wider range। उतना ही पैसा कमाना है, थोड़ा दूर जाके कमाऊंगा, लेकिन पास में स्ट्राइक लेग को सेल करके 50, 200, 500 पॉइंट दूर एक और स्ट्राइक प्राइस को बाय करके इफेक्टिवली तो वही बन रहा है मेरा, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और प्रॉफिट फिर भी देखिए अच्छा खासा 0.5% का प्रॉफिट आ गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले दिन आपको प्रीमियम बहुत कम लगेगा। अब जैसे इसी केस में हम लेते हैं, तो फ्राइडे के दिन जब हमने बहुत इनिशियली पोजीशन डिप्लॉय करी, तो कितना प्रॉफिट दिखा रहा था? 0.2%। लेकिन इतना मूवमेंट करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे 0.2 का डबल से भी ज़्यादा 0.5% लेके गया ना। हाँ, अभी कुछ लोग हैं जो कहेंगे यार 0.5% क्या होता है? तो 0.5% अगर आप, जो मैं बार-बार कहता हूँ, अगर आप वीकली तौर पे अर्न करने लग गए, तो आप 1 मंथ का 2% कमाएँगे, और 12 महीने में ये हो जाएगा 24%। 24% प्लस आई एम सर्टेन आप इसमें कोलैटरल्स आपने रखे होंगे, जीसेक, एसजीबी, या ईटीएफ, कोई भी आपने इसमें भारत बॉन्ड टाइप कुछ ना कुछ तो रखा होगा, लिक्विड बीज, और कुछ नहीं तो कोलैटरल आपको 6-7% तो कमा के देगा। तो आपका 24% प्लस वो 6-7% आपका 30-31% हो गया। तो 30-31% इतनी सेफ्टी के साथ अगर आप कमा रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो इट्स बून ऑफ अ स्ट्रैटेजी। बट हाँ, अगर आप उससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, 50%, 60% वैसे कमाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली दिस चैनल इज मेंट फॉर कॉमन ट्रेडर्स। आई एम ऑल्सो कॉमन ट्रेडर, आई एम नो एक्सपर्ट, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू टू कॉमन ट्रेडर्स ओनली। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ये सबको ये चीज़ बताई जाती है, ठीक है ना, कि व्हेन वी गो अप बाई स्टेयर्स एंड कम डाउन बाई एलिवेटर, ऑप्शन सेलर्स की लाइफ यही है, छोटे 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 प्रॉफिट कमाना और बड़ा लॉस, फिर छोटे 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 प्रॉफिट कमाना, फिर बड़ा लॉस। अब ये तीन चीज़ हो सकती है, या तो ये आप छोटा छोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं और बड़ा लॉस कर रहे हैं, और ओवरऑल आपका कैपिटल कम होते जा रहा है। यही चीज़ करके आप अगर स्टेडी रख रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे। और तीसरी चीज़ होती है कि अगर आप छोटा 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 प्रॉफिट कमा रहे हैं और लॉस को आप मिनिमाइज कर रहे हैं,
बहुत छोटा लॉस हो रहा है, या जहाँ पे जनरली लोगों को लॉस हो रहा है वहाँ पे आपको एक छोटा प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका ग्राफ जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन्होंने भी मेरा पहले के 2 वीडियो नहीं देखे, उनको अगर स्ट्रैटेजी में कोई भी डाउट है, रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली जाके वो दोनों वीडियो देखिए और इस स्ट्रैटेजी को शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत लोग स्ट्रैंगल्स ही करते हैं मार्केट में, और जो भी स्ट्रैंगल कर रहा है उनके लिए एक फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यही स्ट्रैटेजी कीजिए, आप इसको एज अ बैकअप रख सकते हैं, इसको एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, इसका कोई पार्ट आप अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा डेफिनेटली। शिफ्टिंग स्ट्रैंगल्स या निफ्टी स्ट्रैंगल 2.0 जो भी हम कहते हैं, बट इट विल हेल्प यू। सो साइनिंग ऑफ, थैंक्स अ लॉट, गुड डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 13 दिसंबर 2024 फ्राइडे का दिन है। कल 12 दिसंबर को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुई है, और सच कहा जाए तो ये जो वीक है इट वाज लाइक अ ड्रीम वीक फॉर एनी ऑप्शन सेलर। इतनी आराम से और इतनी अच्छी क्वांटिटी में एक ऑप्शन सेलर इस वीक में पैसा कमा पाया है कि वन फील्स लकी। लेकिन जो चीज़ मैं इस केस में हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे ये टॉपिक डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट में एक वोलेटिलिटी स्पाइक आता है, उस वोलेटिलिटी स्पाइक में ऑप्शन सेलर्स का लॉस होता है, और उसके तुरंत बाद अगर वोलेटिलिटी क्रैश जो आता है, इट इज़ अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग टाइम फॉर एन ऑप्शन सेलर, बिकॉज ये वो वक्त है जब आप बिना किसी ज़्यादा मेहनत के अपना पैसा कमा सकते हैं। ऐसा ही इस वीक में भी हुआ है। लास्ट थर्सडे हमने देखा कि मार्केट तकरीबन अप डाउन के हिसाब से निफ्टी का इंडेक्स कुल मिला के तकरीबन 1400 पॉइंट का मूव दिया। दोनों साइड के ऑप्शन सेलर्स, कॉल और पुट साइड के दोनों को काफ़ी घाटा हुआ, और उसके बाद ये जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स थे शायद उन्होंने थोड़ा इसमें अपना ब्रेक इवन तक पहुंच गए थे, नो लॉस नो प्रॉफिट में निकले। और इस थर्सडे भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वैसा ही एक मूवमेंट आएगा, और लोग डर गए थे। लेकिन इस वीक में मार्केट ने दोबारा फॉक्स किया लोगों को, और लास्ट वीक जहाँ पे इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी, इतना ज़्यादा मूवमेंट दिखाया, ये थर्सडे वाज एक्सट्रीमली फ्लैट। और न सिर्फ ये थर्सडे बल्कि पूरा का पूरा वीक जो था, अगर मैं कहूँ तो मोर और लेस फ्लैट ही था। तो इंतज़ार करते रहे लोग पहले पिछले थर्सडे की एक्सपायरी के बाद, जब पीपल हैव बर्न्ड देयर फिंगर्स। फिर फ्राइडे से इंतज़ार शुरू हुआ कि शायद आज वो मूव, वो वोलेटिलिटी कंटिन्यू होगी, नहीं हुई। फिर वीकेंड आ गया, वीकेंड में फिर मार्केट के जो अपना यूएस का कुछ डाटा आना था इंटरेस्ट रेट्स वगैरह का, उसके लिए वोलेटिलिटी मेंटेन रही। लेकिन मार्केट जो है पूरे हफ्ते कहीं भी मूव नहीं किया, और एट द एंड ऑफ द डे, द एंड ऑफ द वीक थर्सडे को भी इतना फ्लैट मार्केट था। खैर, हम आते हैं कि लोग इसका काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन निकालेंगे, काफ़ी सारे रीजंस देंगे, इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अभी यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आएगा। अरे भाई, ये सबको पता है, लेकिन आम ट्रेडर इसमें से कैसे फ़ायदा निकाल सकता है अपना, वो बताइए ना। वो कोई बताने को तैयार नहीं है। तो खैर, लेट मी ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कैसे इस टाइप के मार्केट मूवमेंट से अपना फ़ायदा निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है इसमें कि आपको अगर इस टाइप के वीक्स का फ़ायदा उठाना है तो आपको मार्केट में बने रहना ज़रूरी है। आप पिछले वीक की वोलेटिलिटी या पिछले थर्सडे की वोलेटिलिटी में इतना बड़ा लॉस मत कर लीजिए कि आप मार्केट में अपने आप को सस्टेन ही ना कर पाएँ अगले वीक में जब मार्केट आपको बैठे बिठाए पैसे दे रहा है, उस टाइम पे आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए मैं दोबारा आज बात करने वाला हूँ, जो हमारा सिंपल सी स्ट्रेटजी है निफ्टी स्ट्रैंगल के लिए, और निफ्टी स्ट्रैंगल फार ओटीएम स्ट्रैंगल, और काफ़ी हद तक काफ़ी फार ओटीएम, जो कि जिसके डिटेल्स मैंने आपको लास्ट वीक में बताए थे कि आप फ्राइडे के दिन 1500 और 1200 पॉइंट के डिस्टेंस से स्टार्ट कीजिए। चलिए मैं आपको लास्ट वीक का एग्जैक्ट बताता हूँ। आप देखिए, फ्राइडे के दिन मार्केट तकरीबन 9:25 को हमने पोजीशन ली। हमने नीचे तकरीबन 1500 पॉइंट और ऊपर तकरीबन 1200 पॉइंट, वेरी वेरी फार अवे हमने अपने स्ट्राइक प्राइसेस को सेल कर दिया। फ्राइडे कुछ खास नहीं हुआ। मंडे 955 925 अगेन हम वापस आए, जो हमारा स्ट्रैंगल डिप्लॉयड था उसको स्क्वायर ऑफ किया, नया स्ट्रैंगल डिप्लॉयड किया। जहाँ पे भी स्ट्राइक प्राइस था 9:25 को, वहाँ से 1200 पॉइंट नीचे, 1200 पॉइंट नीचे, पहले 1500 था, इस बार 1200 पॉइंट नीचे, और ऊपर पहले 1200 था, इस बार 900 पॉइंट ऊपर हमने स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दिया।
सेम वे ट्यूसडे का दिन 1200 और 900 पॉइंट ऊपर नीचे के स्ट्रैंगल को हमने स्क्वायर ऑफ किया और हम आ गए अपना 900 पॉइंट नीचे और तकरीबन 625 पॉइंट ऊपर, वहाँ पे हमने डिप्लॉय किया। वेडनेसडे हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने इसको टच नहीं किया और थर्सडे के दिन सवेरे हमने 550 पॉइंट नीचे और ऊपर तकरीबन 400 पॉइंट ऊपर हमने स्ट्राइक प्राइसेस को सेल कर दिया और मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, तो हम चुपचाप जो भी प्रॉफिट था उसको लेके घर वापस आ गए। बस इतनी सी स्ट्रेटजी थी, बहुत बड़ा कुछ नहीं था इसमें। हाँ, अभी इसमें ज़रूरी बात यह है कि जो मैंने आपसे कहा कि यही स्ट्रेटजी मैं हर वीक डिप्लॉय करता हूँ, हर वीक। और इसमें एडजस्टमेंट क्या करता हूँ कि पर डे का एक लिमिट रखता हूँ कि 300 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है और ऊपर की तरफ तकरीबन 225 पॉइंट। ठीक है, ये 300 और 225 क्या है? अगर आप देखेंगे कि आप 5 दिन के लिए 1500 पॉइंट ले रहे हैं नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट पर डे अगर 300 पॉइंट्स मूव करता है तो भी मेरा ये स्ट्रैंगल का जो टेंट है मार्केट इसके बीच में रहेगा। लेकिन अगर किसी दिन ये 300 पॉइंट से ज़्यादा मूव कर देता है उस टाइम पे क्या करना है और क्यों करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, 300 पॉइंट अगर एक दिन में मेरा मूवमेंट का टारगेट है, उतना मूवमेंट उसने नहीं दिया तो अच्छी बात है, लेकिन उतना मूवमेंट अगर वो कर गया तो मतलब ये मेरे लिए एक चेतावनी है, एक खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक दिन 400 पॉइंट नीचे गिरा है, 400 पॉइंट नीचे गिरा है तो व्हाट स्टॉप्स इट फ्रॉम ड्रॉपिंग अनदर 400-500 पॉइंट्स ऑन द नेक्स्ट डे। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि शायद इस तरह का अगर एक ट्रेंड डेवलप हो जाए या मार्केट इस तरीके के मूवमेंट देना शुरू कर दे तो क्या होगा भाई, ये मेरे ट्रेंड से बाहर चला जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रूर समझिए कि स्ट्रैंगल में 99% जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे या जो भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, हमेशा हम एक स्ट्रैंगल को लेते हैं। एक स्ट्रैंगल में एक साइड का जो हमारा चैलेंज साइड होता है, मतलब मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो नीचे के स्ट्राइक प्राइस को हम बोलते हैं चैलेंज साइड और ऊपर के साइड को हम बोलते हैं अनचैलेंज साइड। तो आपको हमेशा सिखाया जाता है कि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है और आपके स्ट्राइक प्राइस की तरफ बढ़ रहा है या ब्रेक इवन की तरफ बढ़ रहा है तो आप उसको कुछ मत कीजिए। आप ऊपर वाला जो आपका सोल्ड कॉल स्ट्राइक प्राइस है उसको आप नीचे ले आइए। करेक्ट? इसका इन्वर्स भी करेक्ट यही होता है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका अनचैलेंज साइड मतलब जो नीचे वाला पुट का स्ट्राइक है उसको आप ऊपर की तरफ मूव करिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं अलग करता हूँ या मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ जो भी स्ट्रैंगल कर रहे हैं, प्लीज़ 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 डोंट गेट मैरिड टू वन ऑफ द स्ट्राइक प्राइसेस। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी अगर आपने नीचे का एक स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है या ऊपर के स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है, आप कभी भी ये मत कीजिए कि मैं उसे हटाऊंगा ही नहीं। वो हमारी पोजीशन ना हो गई अंगद का पाँव हो गया कि उसे हटाना ही नहीं है। नहीं, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और यही सबसे बड़ी खामी है। बाकी सब ट्रायंगल्स में जो भी आपको सिखाया जाता है या जहाँ पे भी आप यूट्यूब वीडियो देखिए या कहीं पे भी देखिए, ये कि भाई आप इसको तो मूव मत कीजिए और आप दूसरी साइड वाले को क्लोज इन करते रहिए। उससे क्या होगा कि भाई आप डेल्टा मैच करेंगे और डेल्टा आपका न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं, ये एक रेसिपी है कि कल अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है एक वीक में, तब आपको भी कई बार लगा होगा कि काश मैं पहले ही इसको स्क्वायर ऑफ करके निकल गया होता है ना? तो ये ख्याल अगर आपके दिल में आया है, देन यू आर नॉट रॉन्ग। आपका माइंड लॉजिकली सोच रहा है, आप उसमें से पहले ही निकल जाइए। जब आपका लॉस छोटा है तो आप उसको पहले ही निकल जाइए। अब पहले कब? अब ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट 50 पॉइंट मूव करे और हम उसको स्क्वायर ऑफ कर दें, नहीं। इसीलिए 300 पॉइंट आज की डेट में, मैं 13 दिसंबर 2024 जो भी बाद की डेट में इस वीडियो को देख रहे हैं, कि भाई आज की डेट में जब मार्केट तकरीबन 24,500 या 700-600 इसके आसपास है, तब निफ्टी का एक रेंज जो है एक दिन का मूवमेंट का, वो 300 पॉइंट है नीचे की साइड में और 225 पॉइंट या 250 पॉइंट ऊपर की साइड में, जिसे एक अच्छा खासा मूव माना जाता है। अगर उसने 300 पॉइंट नीचे मूव किया है तो आप इस स्ट्राइक प्राइस को, जो आपके नीचे की तरफ का स्ट्राइक प्राइस है, उसको स्क्वायर ऑफ कीजिए और यहाँ से दोबारा आप जितना भी आपका स्पेसिफाइड डेज है, मतलब अगर आप फ्राइडे के दिन है 1500 पॉइंट नीचे और 1200 पॉइंट ऊपर, अगर आप मंडे के दिन है तो 1200 पॉइंट नीचे 900 पॉइंट ऊपर। सिंपल है, 300 पॉइंट डाउन साइड पर डे जितने भी डेज लेफ्ट हैं, और ऊपर की तरफ भी ऑलमोस्ट सेम, लेकिन उसका 75% आप वहाँ पे उठा के अपने स्ट्रैंगल को वापस रीडिप्लॉय कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका डेल्टा न्यूट्रल दोबारा हो जाएगी स्ट्रैटेजी। जो आपका लॉस हुआ वो लॉस छोटा होगा, क्योंकि अभी तक मार्केट ने बहुत बड़ा मूव नहीं किया। और अगर आप T+0 लाइन को देखें, T+0 लाइन को अगर आप ध्यान दें, तो अभी तक वो डिप में नहीं गया है।
बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है, वो अभी भी एक कंफर्टेबल रेंज पे, ठीक है। और इस छोटे लॉस को मेकअप करने के लिए आपने ऑलरेडी दूसरी साइड से, कॉल साइड से कमाया है, ठीक है। जब आप उसको और क्लोज ले आते हैं तो वो आपके प्रॉफिट पोटेंशियल को फर्दर भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ट्राई करें। और जो चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो मूवमेंट है, अगर आपने इतना कर लिया और आप सिर्फ इसको वीकली पे लगाएं, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर लगाएंगे, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको पिछली बार भी ये चीज़ बताई थी कि एमटीएम लॉसेस बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम डिके कम है एज कम्पेयर टू योर वीकली। वीकली का टाइम डिके फास्ट हो रहा है, मंथली का टाइम डिके स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एमटीएम लॉस भी कम होगा वीकली में, और इस चीज़ को आप करते जाइए। आप 99.99% यू विल बी इन प्रॉफिट। जिस वीक में मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ, आप इस चीज़ को अगर करते हैं तो पहले तो आपका लॉस नहीं होगा, अगर होगा तो मैनेजेबल होगा, बहुत छोटा लॉस होगा। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक के लिए आप मैदान में खड़े रहेंगे। इतना बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा कि आप शॉक में आ गए, आप नेक्स्ट वीक के लिए मैदान में खड़े हैं। और नेक्स्ट वीक में, जैसे कि ये वीक था, इस वीक में जब मार्केट ने आपको बैठे बिठाए एक वोलेटिलिटी क्रैश दिया है और आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं करना पड़ा और इतना डिसेंट आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो खैर, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा डिसाइड करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो, और प्लीज़ इसको बैक टेस्ट करिए, ठीक है। मैं कोई यूजुअल यूट्यूबर नहीं हूँ जो बहुत फ्लैशी वीडियोस बना सकता हूँ या बहुत मेहनत कर सकता हूँ उस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। मैं ट्रेडर हूँ भाई, और ये सिर्फ एक एक्सप्रेस करने का ज़रिया है। और अगर किसी को इससे फ़ायदा होता है, अगर किसी की आंखें खुलती है इसमें से कि अरे यार, मेरी पूरी टीचिंग यही थी कि इस ट्रायंगल के एक लेग को मूव नहीं करना है, और ये भाई साहब तो बता रहे हैं कि उस ट्रायंगल के लेग को मूव कर दो, जी बहुत छोटा सा रेवोल्यूशन होता है, और बहुत छोटे से रेवोल्यूशन में ही आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो शायद आपको इसमें फ़ायदा हो। जहाँ जहाँ आपको पुराने टाइम पे बड़े लॉसेस हुए हैं, वहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखिए कि क्या आपका लॉस उतना बड़ा होता, या आप टाइमली निकल गए होते, या ओवरऑल उस वीक में या उस मंथ में आप प्रॉफिट में आ गए होते। तो ट्राई कीजिए ज़रूर। और एक और मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर इसमें से कुछ भी आपको काम का लगा है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डेफिनेटली आप इसको शेयर ज़रूर करें। भले ही आपको ये पसंद आया चाहे नहीं आया, लेकिन अगर लोग हैं जिनको इस आइडिया की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि हाँ उनको ये काम आ सकता है, तो उनको ज़रूर भेजिए, शायद उनको इससे कोई फ़ायदा हो। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में। Good evening, friends. So, this is my first video in English. Before this, I have uploaded around 3 videos which were in Hindi. So, thought let's try something in English. Let's see. Anyway, if you have not seen those 3 videos which has been posted before this, you may like to go and see them, as they gives out the basic and the rationale behind this strategy which we call as Nifty Strangle 2.0 or a shifting strangle. Okay, so today is 26th of December 2024, and today was the last weekly expiry and the last month of this calendar year 2024. And what a week it was! It was a great week for us. We made a profit of 0.7%, and overall in the month of December we have been able to make a profit of 2%, which by my standards are very good. I am happy with that. I could have made more, but in the first 2 weeks I had some alternate requirement of the capital, so could not deploy it fully. So 2% at the end of the month among this great volatility in the market has been really good for me. I'm really thankful to every one of you. Anyway, what were the peculiarities of this week? Well, firstly, it was a 4-day week. Christmas being a holiday on Wednesday. There was the Bank Nifty monthly expiry on Tuesday, and there was supposed to be the lack of foreign cues, as they were supposed to be inactive due to Christmas. But did it happen? Let's see. So on Friday, what happened was that Thursday we were already reeling under the shock of a gap down opening,
as everybody was expecting that 24,000 will hold, but a gap down opening took it. And Friday, well, the fall continued. The fall continued. It was 500 points intraday downfall which we saw, and it created another wave of shock and panic among the traders. Uh, However, the FIIs are supposed to be on the vacation, but as every time we are told that December month is supposed to be a lackluster month. However, last year December, we saw the market shooting up like anything, and this year we saw there is a huge amount of volatility. Friday 500 points fall was a testimony to that. So apart from Friday, which also gave a shot to the VIX and the volatility, the Monday, Tuesday, and Thursday were pretty flat. Tuesday was the Bank Nifty expiry. So let's come on day wise what happened. So on Friday, now the market at 9:25, that is when we take the positions, was at around 23,913. So for the Fridays, we deploy our strangles at 1500 on the downside and 1200 on the upside. So we have something like a very wide strangle to start with. That came out to be 22,500p and 25,000c. Apart from that, one more thing that we do is to have a daily adjustment trigger points, 300 points on the downside and around 225 points on the upside. So that came around 23,630 and 24,130. So what happened was entire day the market was mostly on the downward bias, and towards the end around 3 o'clock it did breach our lower trigger point of 23,630. In fact, it went a good about 100 points below that, but the moment it hit 23,630 and there was a weekend coming, we do what we do is to close the previous strangle, and at the same distance, that is 1200 on the upside and 1500 on the downside, at around 1520 we deployed a fresh strangle which now came to 22,200p and 24,800 CE. Now, what was really helpful was the fact that despite market moving so much, there was some sort of a uh, decay in the premiums. So actually, we were in profit when we shifted this position. So it really helped. So this was the new position, and we left it like that. Monday, 23rd December 2024, market open at around 23,781. That was the strike price at 925. So as we do, we close in the strangle, we squeeze the strangle, and now we go for 1200 points on the downside and 900 points on the upside. So we closed the previous carried over strangle, and we deployed the new strangle at 22,500p and 24,750c. Apart from that, we also had our adjustment trigger points, 300 point downs, 225 points up, which came at 23,460 and 24,023 on the upper side. However, market made a high of 23,870 and low was 23,650. So basically our adjustment trigger points were not touched, and so we did not touch this triangle also. Next came Tuesday. Now Tuesday we did something different, and that is because the Bank Nifty expiry was there. So earlier uh, I do used to trade the Bank Nifty expiry just by closing the positions for that day, do the expiry trading for Bank Nifty, come out, and again toward the end we retake the positions. So same thing we did here on Tuesday as well. So what we did was we closed this position, the previous carried forward position of the strangle, and we deployed a fresh strangle in
Bank Nifty. Uh, Now, just to give you a brief idea about how I take the position on the expiry day. Well, as you are aware, on the expiry day for Nifty, we go around 550 points down and 400 points up. Now, now we proportionately increase the range for the Bank Nifty. Bank Nifty was at 51,233. The corresponding value of Nifty was 23,765. You divide one by the other, you get a factor of 2.15. We multiply it to the range, so we get the 400 becomes 860, 550 becomes 1182. Market is at 51,238. So we get a wide range. On the lower side 50 100p, and on the upper side 52 200c, and around the midpoints of both these things we have our adjustment trigger points for the expiry day. In case it hits our adjustment trigger points, we will close the present strangle and deploy a fresh strangle. Well, on Tuesday also Bank Nifty didn't move so much. After some time it went flat, so we recorded some 0.1% of the profit on our capital deployed, which was around 33,000 for me. And towards the end, around 320, uh, we closed the Bank Nifty position, and now we took the position on the Nifty, back onto the Nifty. Around 320, market was at 23,740, and so we catered for a gap down and gap up for the next day, which was Thursday. We catered for 300-point gap down, a 550-point movement for expiry, the 225 gap up, and 400-point movement on expiry. We got these figures of 22,850p and 24,400c, right? So this is how we deployed our strangle on Tuesday towards the end on Nifty. Otherwise, just to make a mention here, otherwise on a normal Tuesday, if it would not have been a Bank Nifty expiry, if it would have not been a holiday on Wednesday. What we usually do on Tuesday is this: we take the position at 925, 900 points down and 675 points up, and in case the adjustment points are not triggered, we leave it just like that. But only in this case, I told you the rationale why I went for this. And so we had this particular strangle when the market closed on Tuesday. Then came Thursday, today's day, and as told you earlier, my expiry day positions: 550 points down, 400 points up, wide range. And well, the adjustment points were again the midpoints. However, market just was sideways. A very minor movement took place, and from morning itself, the rolling straddle, the premiums of the straddle at the money straddle was declining. So we were pretty sure in first half hour that the way it was not going to move much. But all those analysis on one side and your safety is on the other side. To me, safety is prime. Come what may, come what levels tell me, what technical analysis tell me, I will maintain my distances, and I did so this time also, and I was rewarded well. We got 0.6% of profit from Nifty and 0.1% of profit from Bank Nifty, and overall we closed at 0.7% for the week. And if you remember, if you have seen my last video, we had a very volatile week last week, and we still made 0.5% overall. In the month of December we made 2%, and I'm really very happy about it. Going forward, this week, this month, this entire year has been very good for us. And what I like to tell you is that we have started a small little Telegram channel for the just to share my personal trades,
And just to explain how I go about it, the idea is purely just in case somebody needs help. And I'm no big short trader or anything of that sort. I'm just a common trader like you. But in case you find value in what I'm telling you, you might consider joining it. The Telegram channel description is link is there in the description. uh, you can join us there. It's absolutely no strings attached. And lastly, uh, kindly share this video, share with anybody who is doing option selling, who is looking for a safe and conservative strategy, who is doing strangles. Please do so. That will help us to grow the channel. Thank you, ladies and gentlemen. Have a great weekend. See you next week. It's real time. You are free to do that. Now, coming to this week. So, 2 weeks before that, we had the profits of 0.5% and 0.7% in the weeks before this. And last week, we had a profit of 0.22%. And it was not easy, I must tell you. Anyway, the profit is not that important. What is important is that there is so much to learn technically in this week that has numerous peculiarities, which as a trader, you will be able to appreciate. For those who are new, well, here we discuss a conservative strategy based on Nifty options selling, and it is the prime focus is on the safety and protection of your capital with reasonable returns. So I have posted 4 previous videos giving out the weekly performances and the strategy itself. Make sure you see those videos in case you're interested. So coming to this week, well. This week, Friday, it started with a period of some flat or very little movement in the Nifty. So the premiums were very low to start with, relatively low, I would say. And thereafter, as the week went ahead, the premiums actually did not decay. And if you look at the ATM straddle and on Wednesday closing, so that gives an indication of the expected volatility in the market. So that was very high. It is around 230, wherein the value should not have been more than 120 or so. So yes, it did indicate that Thursday is maybe there may be a big move. Nothing sacrosanct. But at the same time, when market went up, now India VIX showed a drop. In fact, on Thursday, if you notice the move of India VIX, it dropped substantially, wherein the Nifty actually made a very huge move. So sometimes India VIX alone doesn't give you the kind of volatility which we require as option sellers, but there has to be some other kind of indications. Okay, now this is very important that 20th of December 20th of December market made a high of 24065 and a low of 23537. So let us say a range of around 24,000 to 23,500, and for 5 trading days or 1 week after that, this range was not broken. Market was making very small moves and was within this range. Finally, it broke the range on Monday, this particular Monday, or Tuesday rather. On Tuesday, it broke the range on the lower side. So market was already below 200 DMA, and breaking that particular range on the lower side could have indicated a breakdown. But on the contrary, what we saw was market pulling up after that, and then Wednesday it pulled up slightly, and Thursday market literally launched itself. It became a rocket, and that is how you find that picture of rocket in my on my thumbnail. That's fine, but it is not a healthy situation for the option sellers, and especially the non-directional option strategies like strangles. It is very difficult period. Anyway, so
explanations came by that there are some sort of company results are expected, quarterly results in January, and there were certain reports indicating maybe good results, or since the previous results were bad, so in comparison they are going to be better. So in that expectation, then came the explanation of a pre-budget rally. But all in all, what I have seen as a normal trader, as a common trader like you, all these explanation precedes after the market movement has taken place. It is always we are trying to chase up and trying to justify why market has moved. If today market falls 500 points, there will be another set of explanations that will be floating around. But the problem is that how do we tackle these things as traders, as normal traders, as common traders? Because we do not have access to so much of data apart from what news channels want to tell us, or what comes out in some economic times or something like that. And there are always various positive news as well as negative news which are floating around, and market moves as per its own whims and desires. So what is important is how do you and your strategy rather adapts itself to any sort of market movement. So this week was actually very interesting, and it was actually there's a lot to learn in this particular week. And finally, as I said, the market was trading on below 200 DMA. That's actually a bearish sign. But on Thursday, we saw the market moving up from the day's low around 475 points. It not only crossed 24,000, it went and crossed 24,100 and 24,200 as well. So another set of explanation came that it was SL hunting, stop loss hunting was taking place, and wherever the shorts or the call writers were sitting, their position was being eaten up by the big firms. Okay, fine, but what is important is how do we manage to take that sort of big moves in our stride. And as I always say, that this kind of big moves will come, especially now with the weekly expiries are limited. And in those circumstances, those big players who have already tasted blood, they will come and pump in their money, and market will move very widely. So what can we do about it, and what have we done? That is what we are going to see. As market has not moved much, we closed in the strangle, tightened it to 24,700 C and 22,500 P. Not much, little bit. And we had our adjustment points ready for that day at 24,010 and 23,450. Again, on Monday, it was not touched, so we didn't have to do much on Monday also. But what was surprising was that initial premium was not that much on Friday, and on Monday also the decay was not that favorable. So market was didn't move much on these 2 days. That was all right. Premium decay was also not happening that greatly, except on Monday it started moving a bit on the downward direction. Now let's come to Tuesday, and Tuesday was quite important, I must say. So Tuesday, 31st of December, uh, at 9:25, the market was around 23,545. Okay, so it had moved down substantially from the previous day, and we closed the old strangle and deployed the new strangle with the gaps as shown here: 900 points on the downside and 675 points on the upside, which comes to 24250 CE and 22600 P. So in effect, we had shifted the strangle on the downward side, and these were our adjustment point: 23,200 and 23,810. However, market tried and make some recovery on that day after gap down opening. In either cases, the adjustment points were not triggered, so it was all right. Uh, Actually, here I would like to mention a point that there was a query from one of the followers that why do you make the adjustment so much on the sensitive side on Wednesday and Thursday? You see, here the condition was what? The market was actually playing up in a range. Okay, and as was the case on the previous listing also. So you're not expecting much of the move, and the first 3 days you have a wide move, so you are certain that you will be able to handle the situation. So as you close in onto the Wednesday and Thursdays, here once the market has not moved that much in the first 3 days, you are generally aware that okay, it is very much capable of making a larger move in the
coming days, and especially with the expiry around. Okay, so you have to be much more sensitive to your adjustments if the market has not moved much in the first 3 days, and the premium decay is not happening that much, those kind of things. So anyway, till Tuesday we have seen the situation was quite comfortable as far as adjustment is concerned. Now let's come to Wednesday. Yeah, Wednesday was quite important. Wednesday happened to be the New Year day, and the Wednesday generally we do not close in our strangle because we want the range to play out till Thursday, and on Thursday morning we want to have an adequate range. Okay, so we carried forward the overnight positions. We just redefined our adjustment points a little bit. Market had moved around 90 points, so we also had moved our adjustment points accordingly. But then around 1 p.m. Market was at 23,740. Okay, now here if you see, pay attention to the zero line, this dotted line, which you will be able to see in your payoff chart. Now what is important to understand here, that till now the dotted line is in more or less a horizontal, a flat position. Okay, now the moment it start going up further, the drop in the zero line is quite substantial. Okay, and why does this happen? It also represents your combined delta of the position. So those who understand delta, those who understand Greek of the position, they will be able to understand. Otherwise, for a normal trader or a common trader, do watch your zero lines, the dotted lines. They are very critical, they're very important. If you feel threatened at any point of time that till now I am in a small profit and or small loss, and further if it makes another 100 points or 200 points move, and my dotted line can come in a very in a depression, that means the losses are going to be quite heavy. Okay, and that is why I always advocate against the normal strangle adjustment, which says that you hold your challenge side, because then you understand what happens to your zero line or your dotted line if you are holding till your lower strike or upper strike, whichever is being challenged. There the dotted line has entered a big depression. That means you are sitting on a big loss. Recovering that loss through further adjustment becomes difficult, and more so thereafter it becomes a battle of managing your losses rather than trying to get out at a lesser loss or a minor profit. Okay, so on 1 p.m. we closed the previous strangle which we were carrying on and deployed a fresh strangle. Now what happens is, you see my payoff chart here, and the position has come to the center. We have not tried to reduce the distances for obvious reason. We just made a adjustment so that our positions comes in center. But does it everything is all right? No. It the profit threshold, whatever the projected profit is being shown, maximum profit, that comes down. Okay, but as we told that our strategy is conservative, and we are okay with small profits, but we do not want to make any major losses. So that is how we adjusted our position to this. And yes, we did not wait for the trigger points to be triggered. Actually, we found that okay, this situation is looking not so tenable, and it's better to adjust at this point of time. That is why the experience counts. And as you must have seen on the next day, Thursday, that market has actually become a rocket. So yes, those sense does come to you. So no matter what anybody tells you, either me or any expert, believe your sixth sense, believe your sense of safety, security. If you are uncomfortable, if you are feeling uncomfortable, make the adjustment, just bring it to the middle, and thereafter you are good to go. You will be able to take rational and peaceful decisions rather than doing firefighting and getting into that panic mode. Anyway, let's come to Thursday now. And Thursday, uh, as you know that market has moved quite a bit, and let's see how did it fan out on Thursday. So on Thursday what we usually do is at 9:15 itself we take our positions. Why? Because of this new regulations wherein you are supposed to give extreme loss margin. So there is around 30% margin calls which automatically comes, and if you do not square off your positions, the broker will be doing it. So rather than that, I carry my Wednesday positions overnight, and thereafter I close them at by 9:15, 9:16 on Thursday itself, and deploy the new strangle, which on Thursday generally is in the range of 400 points on the upside and 500 or 550 points on the downside. So at 9:15 market was around 23,783. We had a strangle at 24,200C and 23,250P. 24,200C, mind it, this is the point which the market crossed during the day, this particular day, and was very far off from the morning time when we started. The adjustment points are normally kept at half the range which is there. Okay, the midpoints rather. But again, as I tell you, if you do not feel comfortable, if you feel marking is making a one-sided move and the other
balanced. I had a strategy which I'll discuss some other day, which is called 10 delta strategy, in which it was a directional strategy, which I used to follow, and there I used to take positions only on one side. Taken a small little loss also, it is fine with me. However, I ended up with profit, as you have seen. So this was the final position, final adjustment we made at 1 p.m. 24,450C and 23,550P, and well, market crossed 24,200. Give them a fresh point of view. And how was your week? And how was the last year? Do tell us in your comment section. And lastly, do consider joining my Telegram channel. All these adjustments I had given in my Telegram channel in a real time. So if somebody has actually followed it, I won't say that he would have made a very good profit, but definitely he could have avoided the losses. So thank you, gentlemen. See you next week. So a fall of 700 points, and again we heard another set of explanation. But what does the common trader wants? I mean, we made a profit of, and good profit of 0.56% amidst all, it's almost 2% in 4 weeks. So decent enough for us. And what is important is to let people know them. Two things. Because most of the common traders are doing strangles only. The fire as common trader is quite drastically, and around. Good morning, ladies and gentlemen. It's 9th January 2025, Friday, and we have just finished the week. Thursday expiry has just taken place, and what a week it was. Last week we saw a jump of 475 points, nearly 500 point on the last expiry day, that is Thursday. And there were a lot of explanations which were floating around, quarterly results, projection, and blah blah blah. But this week, all those things crashed the market. HMPV virus, Trump tariff, overvaluation of the market, all those stories came back to us like ghosts. But what does the common trader wants amidst all this is not just explanations. He or she wants to know that how can he protect his capital, what can and how can he or she make money despite all these conditions in the market. And yes, those who wanted to know, this week also we made a profit of, and good profit of 0.56% amidst all this volatility. But yet that is not important, even if it is also not important that for the last 4 weeks since we have started sharing our trades on the YouTube and Telegram, we have made what, 0.5 plus 0.7 plus 0.22 plus 0.56, almost 2% in 4 weeks. So decent enough for us. And what is important is to let people know that there are various sort of this misinformation they are having about this strangle strategy. I'll highlight two of them. Two things. You are playing too close. Your strangle is too close, the range is too tight, and that is why you are letting these promoters, these proprietary desk people or whatever, they are able to see that where is the maximum buildup of your position, and they are able to take advantage of that. And secondly, you have been taught wrong. Yes, you have heard me correctly. You have been taught wrong that when they say that don't move that losing leg of your strangle. Here we believe in shifting our strangles. Here we do not get in love or get committed to one particular strike. Depending on the market condition, we keep shifting, and that is why we are successful. And why strangle? Why not other fancy kind of strategies?
put ratio, call ratio. There are various strategies floating around. Why I focus on strangle is because most of the common traders are doing strangles only. They're easy to understand, they're easy to adjust, and just I heard people saying that during this fall that people with strangles got into problem and all such things. Well, like other YouTube channels, I can tell you 50 strategies and 100 adjustments. Trust me, I can confuse you with the levels and some story of the Financial Times, but that is not my aim. I've done it all, and for a very long time. And I believe that what we require as common trader is one strategy and one set of rules. Yes, you heard me correctly. It is one strategy and one set of rules for all market conditions. If you have been following me for the last 4 weeks since we started this YouTube channel, you have seen the market moving up, moving down, staying flat, and everything. And we have just followed one single strategy and same set of rules, and we have come out victorious every single time. Nothing great to boast about ourselves. It is what market decides to reward those who are patient, those who are not greedy. So that is it. And if you have landed up on this video by accident, make sure you watch the previous 4 or 5 videos we have posted so far to know what the strategy and the rationale behind it. And do consider joining our free Telegram channel, no strings attached, to get the real-time updates on my daily trades. So let's go day by day. So on Friday, which was 3rd January 2025, we had a quite a volatile Thursday, so premiums were quite good. And Friday we have a range of around 1500 points on the downside and around 1200 points on the upside. At 9:25, market was at 24,144. So as per the calculations, we had taken a strangle of 25,200 CE and 22,750 PE. Apart from that, we have the daily adjustment points of 300 points down and 225 points up. That is, if these trigger points are touched, then we shift this strangle. So for that day, we had the adjustment points at 24,360 and 23,850. On that day, market made a high of 24,196 and fell quite a bit. The low was 23,976. So, however, our trigger points were not touched. So we carried forward the position for the overnight. And over the weekend and on Friday we had a quite a formidable premium decay. In fact, we had a MTM profit. It was showing was around 30,000 or 0.1% around. And Monday was very interesting because Monday is the day when that virus news came in, HMPV. So however, we'll see what have we done that day. Nothing great. So Monday morning at around 9:25, market was at around 24,082, and as we do on Mondays, we take the position 1200 points down and 900 points up. So we closed the old strangle and took the position at 22,800 PE and 25,000 CE. And as usual, we have our trigger points 225 points up and 300 points down, which was like this: 24,325 and 23,700. This is how I market on my chart on daily basis. You can have a look. Okay, so what the market did that day was it fell quite drastically, and around 11:45 it triggered our lower adjustment points, that is 23,700. So what we did was we just closed the old strangle and deployed the new strangle at the same distance, that is 1200 points down and 900 points up. So the new strangle came at 22,500 PE and 24,600 CE, and these two were the new adjustment points in case market fell further. At this point we would have picked up and shifted the strangle even lower. However, it didn't happen that day, so we carried forward the positions. And I may sound quite calm right now, but trust me, on that day I was also under quite a bit of stress when the market had started to fall. So it is normal, and we have to understand that as far as we traders are concerned, the stress is part and parcel of the game. What helped me was that all these adjustment points, the trigger points, were all pre-decided. So once it comes there, I don't really fall in love with my strike prices, or I really don't say that no, 23,700 will not be broken. It's broken, it's broken, just shift your strangle. That's the end of it. It helps you to manage your panic. It helps you to manage your stress and rather act in a concise way, pre-planned way. So what happened on Tuesday was that market stayed in a very narrow range. Market was at 9:25 at around 23,764. On Tuesday, we have the range of 900 points down and 675 points up. So we deployed the new strangle 24,450 CE and 22,750 PE, and we made the same trigger points 300 points down and 225 points up, 23,350 and 24,000. So that day there was a complete volatility of the previous day got crushed. Yes, there was good sense prevailed in the market, and the virus news had seen some positive explanations from the health ministry, and people realized that okay, it was not such a big scary thing. Or even was it the reason that why the market fell on Monday is itself a question. Why on that particular day the news came
why it was played up. Anyway, let's leave it at that. We are here to see that how we adjust our positions, because all this market manipulation, the news will continue. So coming on to the next day, Wednesday. Wednesday we do not close the range. We maintain it at the same range at 675 points on the higher side and 900 points on the lower side. Only if there is a substantial shift from Tuesday, we close the old strangle and deploy the new strangle in the same range. So at 925 market was at 746, so not much of a change. So we kept the same strangle and the same trigger points. The On this day, however, we had seen the market going down around 250 points and then recovering around 250 points, so 500 points move. That was quite volatile. However, for us, the low was 23,496, so it didn't touch our lower trigger point, which was at 23,350. So we carried the positions overnight. Okay. Now Thursday, that is today. On Thursday, what we do, we close the old strangle and we take a new position around 400 points up and 550 points down. And sometimes it may sound like an overkill, but those who have been in the market for substantial time can remember those days when even in the last hour market can make such a substantial move. So anyway, market was at 23,674. So we had this triangle at 24,100 CE and 23,100 PE, and we have the midpoints of our range as the trigger points for Thursday. So market was in this very range throughout the day, and we ended up on this week making a profit of 0.55%, which is very good as per me and as per my requirement and expectations. Now, as you have seen what has happened during this week, so I mean, ask you, what's so great about this week? Nothing, right? We had to shift our positions only once, and we did respect the market. That was important. Did we deploy any extra capital? No. We didn't create an ego problem about some levels like 23,500 or 23,800 or 24,000 or some strike price that we will not shift it. No, we were too flexible. Market moves down, we shift our strike price. That is all. And what is important is all this while we were at peace. We were doing the trading peacefully. There was no need to panic. And as we say, we make most of the mistakes when we are panicking. So it is very important that we do feel secure and peaceful while we are trading, and that is only possible if you have adequate range on your side. Another trap I'd like to mention here is that I've seen people promulgating is when they show the percentage profit of their deployed on the particular strategy, that it is the percentage profit of the deployed capital. Now, what do you mean by this deployed capital? This is a very big scam in this word called deployed capital. So if you show a profit of 4% in a week and you deployed only 1/4 of your capital, then you actually earned only 1%, right? So why scam people? Here in this particular strategy, there is no requirement to put additional margin on the table. Once we are shifting, and we are using the same capital over and over again. So just beware of these people when they say these phrase that percentage profit on the deployed capital is so much. So it is not that. You should calculate the percentage profit or loss on the total value of your capital. So the main idea is to stop this myth that strangle can't make you profitable in such volatile markets. Yes, markets are volatile, and you need to adjust your strangle as per the market. It can be seen, as we have seen week after week on this channel, it is possible. Strangle can give you reasonable profits, consistent profits even in the volatile market. You just don't be greedy. And don't be uptight or egoistic that no, I'm right, market is wrong, market will not reach 23,500 or market can do anything. Okay, just be flexible. Now that's all, gentlemen. Now, in case you have anybody who has lost money in the market or who is doing strangle, please share this video with them. Don't just keep it to yourself. Let them also open their minds at the new ways to implement the old kind of strategies like strangle and all, and maybe it will open up their thinking pattern about such kind of strategy. So that's the wrap up on this week. See you next week, gentlemen. Have a nice day. Thank you.